Hello students, good morning to all of you and welcome back again on my channel. So in today's video we will see the remaining questions, question number 61. In previous video I already discussed about the 60 questions. So we are preparing for set examination English literature paper number 2. If you are preparing for the TGT PGT examination, then these questions for you also. And if you're new on my channel, then don't forget to like, share and subscribe. So let's see the question number 61. So read the question carefully first and then try to give the answers. अगर आपको भी आंसर आता है तो आप भी कितने आंसर के मतलब कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पाते हैं उसको काउंट करो. जैसे हमने 61 से 100 तक क्वेश्चंस लिए तो आपके कितने क्वेश्चन सही आए, 15 आए, 20 आए, आप कमेंट करके जरूर बताओ. ठीक है, चलो. Who among the following does not belong to the pre-Raphael brother? तो जेम्स मेलेरियस, D.G. Rossetti, W. Holman Hunt, William Prescott. So the correct answer is D. He not belongs to pre-Raphael brotherhood. Next question. The Renaissance is a classic book by. So the Renaissance is the book by Oscar Wilde, T.S. Eliot, option number B, Walter Pater, and the D, Matthew Arnold. Which one is correct? So here इसका आंसर देने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि विलियम प्रेस्कॉट कौन थे. तो जब हम द प्री रैपिटाइल ब्रदरहुड की बात करते हैं तो प्री रैपिटाइल ब्रदरहुड की भी बारे में थोड़ा सा जान लो. प्री रैपिटाइल ब्रदरहुड यानी कि पीआरबी एक ग्रुप था इंग्लिश पेंटर्स का, पोएट्स का एंड क्रिटिक का, जो 1848 में फाउंड हुआ था, जिसके फाउंडर में इंक्लूडिंग थे जॉन एवरेट मिलियर्स, डांटे गैब्रियल रोसेटी एंड विलियम हॉलमन हंट. और ये विलियम प्रेस्कॉट कौन थे? विलियम प्रेस्कॉट वाज अमेरिकन हिस्टोरियन है, थे नोन फॉर हिज राइटिंग ऑन स्पेन, स्पेनिश एम्पायर, कंप्लीटली अनरिलेटेड टू दिस ब्रिटिश एवेंट ग्रेड आर्ट मूवमेंट. ओके, नेक्स्ट हमारा 62 क्वेश्चन था कि रेनेसा इज अ क्लासिक बुक किसने लिखा था. सो इट इज रिटन बाय द वॉल्टर पैटर. स्पेलिंग मिस्टेक है, so Walter Pater is the correct answer. So the studies in the history of the Renaissance, ये इसका full name था, the studies in the history of Renaissance. 1873 में ये बुक लिखा था वॉल्टर पैटर ने, एंड द रेनेसा इज लैंडमार्क बुक ऑन द लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय वॉल्टर पैटर. ओके, सो ये बुक हाईली फेमस हुई थी फॉर इट्स कंक्लूजन दैट सर्व एज द मैनिफेस्टो फॉर द एस्थेटिक मूवमेंट, जो इंट्रोड्यूस करती थी रेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट्स फॉर आर्ट से. Okay, so the studies in the history of Renaissance, 1873 by Walter Pater. Next question. Question number 63. A novel of Thomas Carlyle, which has a reference to the thought and life of a German philosopher, Teufelsdrockh. Okay, novel है Thomas Carlyle की, which has a reference. Okay, in which there is a reference about the thought and life of a German philosopher and Teufelsdrockh. Okay, so Sartor Resartus, past and present, the life of John Sterling, Frederick the Great. Okay, which one is correct? So the correct option is option number A, the Sartor Resartus. थॉमस कार्लाइल फिलोसॉफिकल नॉवेल स्टार्टर्स रिजॉर्टर्स, जिसका ट्रांसलेशन होता है द टेलर रीटेलर. ओके, स्टार्टर रिस्टार्टर्स टेलर रीटेलर प्रेजेंट करता है एक सटायरिकल कॉमेंट्री ऑन लाइफ, थॉट, philosophy of clothes belonging to the fictional eccentric German philosopher professors. Okay, and the name of that professor is Teufelsdrockh. Next question. अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, एंड ऐसे ही मैं नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं. नाउ, Letton Strachey, eminent Victorian, is a collection of essays. 5, 6, 4 or 3. So the Letton Strachey का eminent Victorians ये जो collection of essay था 1980 में जो publish हुआ था, it is the collection of 4 essays. Okay, 4 is the correct answer. Next question, question number 65. Ebenezer Scrooge, the synonym of miser in English language, appear in which novel? So Hard Times,
ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकिंसन की ये पूरी नॉवल है. एंड द लास्ट इज द क्रिसमस कैरल. विच वन इज करेक्ट? ओके, सो द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अ क्रिसमस कैरल. तो ये जो एबेंजर स्क्रूट है, who has then become a globally synonymous in the English language, cold-hearted, greedy measure, central protagonist of the Charles Dickens novel A Christmas Carol. Okay, और ये नॉवल था क्रिसमस कैरल. Next question. Imagine the country of Angria is associated with. Okay, so the imaginary country है Angria is associated with Charlotte Bronte, Emily Bronte, George Eliot, R.L. Stevenson. And the correct answer हमारा हो जाएगा option number A, Charlotte Bronte. So Charlotte Bronte, as a children, the Bronte sibling invented a complex imaginary word. एक Bronte siblings ने एक word imaginary word बनाया, escape to isolation of their personage, while Emily and Bronte created the kingdom of Gondal, and Charlotte Bronte and her brother Branwell collaborated to co-author and document to intricate histories and the politics and the stories of fictional African empire, and जिसका नाम रखा गया Angria. Okay, so it belongs to the Charlotte Bronte. Now the match the following का question है ये. ओके, यहाँ पे हमें दे गई है नॉवल के नेम, वर्क के नेम, एंड यहाँ पे दी गए कैरेक्टर. ओके, सो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द रिटन फॉर द नेटिव, द मेयर ऑफ द क्रास्टरब्रिज, टेस्ट ऑफ द अर्बर विलास. सो द 67 का हमें सही मैच लगाना है. अभी देखो कैरेक्टर हम बात करेंगे तो लीजा लू ये जो कैरेक्टर है ये टेस्ट ऑफ द अर्बर विलास में है, तो डी हमारा 3 के साथ मैच कर रहा है, तो D3 यहाँ है, D3 यहाँ है, तो C और D दो ही ऑप्शन बच गए. तो देखते हैं इसमें हमारा ऑप्शन C सही है, कैसे वो देखते हैं और थोड़ा सा इस कैरेक्टर के बारे में भी जानेंगे. तो ध्यान से सुनो. फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में कैरेक्टर था गैब्रियल ओक, तो टू इज करेक्ट. तो फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड फीचर द ऑनेस्ट शेपर था गैब्रियल ओक. And the return of the native, the return of the native में एक central character centers on the ideology of Clem Yeobright. Okay, so the Clem Yeobright 4 is the correct here. And the mayor of Casterbridge में एक मिशेल हेंचार्ड की लॉन्ग सफरिंग वाइफ थी, ठीक है, जिसका नाम सुसान था. तो मेयर ऑफ द क्रास्टरब्रिज का कैरेक्टर था, मतलब उसने सफर किया था. फीचर माइकल हेंचार्ड का लॉन्ग सफरिंग वाइफ थी सुसान. एंड द टेस्ट ऑफ द अर्बर विलास में लीजा लू थी, टेस यंगर सिस्टर, टेस की छोटी बहन का नाम था लीजा लू, एंड हु मैरीज एंजल क्लेयर एट द ट्रेजिक कंक्लूजन ऑफ द बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नॉवल विच एंड्स विद द लाइन ऑल आर्ट इज क्वाइट यूजलेस. ओके, द नॉवल की लाइन है, एंडिंग लाइन है, ऑल आर्ट इज क्वाइट यूजलेस. द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, our mutual friend, women in love, a portrait of the artist as a young man. Which one is correct? So the correct answer is A. Oscar Wilde का famous work है The Picture of Dorian Gray. 1890 and 1891 feature करता है famous highly aphoristic preface added to defend the work against the charges of immorality. So the all art is quite useless. It is the ending line of the A Picture of Dorian Gray written by Oscar Wilde. Matthew Arnold's Culture and Anarchy, an essay is political and social Christmas, was first published in. Matthew Arnold का Culture and Anarchy जो essay है political and social criticism, and it was published in which magazine? Okay.
So the Blackwood magazine, London magazine, Cornhill magazine, Harper magazine. So the correct answer is Matthew Arnold's highly influential cultural and political essay, collection of serialized series, which is published in Cornhill magazine. C option is correct. Next question. Identify the poet who had functioned as the editor of the magazine The Hydra. Okay, identify the poet who had functioned as the editor of the magazine, and the correct answer is Wilfred Owen. So the during the First World War क्या हुआ था? The celebrated poet थे हमारे Wilfred Owen, war poet बोल के इन्हें जाना जाता है. He sent to the Cargard War Hospital in the Edinburgh to recover from the shell shock. So while there is a function as the editor of the Hydra, so he worked there as a editor of the Hydra. Okay. Next question, question number 71. Which among the following is the series of dramatic monologue written by W.H. Addams? तो W.H. Addams का एक सीरीज है ड्रामेटिक मोनोलॉग की, उसे हमें आंसर करना है. Let's see the option. Homage to Celio, the Oxford Book of the Light Verse, the Sea and the Mirror, the Shield of Achilles. Okay, which one is the correct answer? And the correct answer is the Sea and the Mirror. तो जो हमारे W.H. Auden है उनके ड्रामेटिक मोनोलॉग की एक सीरीज का है. Okay, तो The Sea and the Mirror, commentary on Shakespeare Tempest. पूरा टाइटल क्या था? The Sea and the Mirror, a commentary on Shakespeare's The Tempest, 1944, is a long poem by W.H. Auden, and it is structured as a series of dramatic monologues spoken by the characters of Shakespeare's play The Tempest, जैसे कि Prospero, Antonio, Alonso, and Miranda. Next question. W.B. Yeats का If It Cast Cold Eye on Life on Death, Horseman Pass By, it's taken from the which poem? So the W.B. Yeats का जो है वर्क ये है, W.B. Yeats ने एक वर्क कंपोज किया था जिसका नाम था अंडर बेन बलबेन. तो अंडर बेन बलबेन लेट 1938 में पब्लिश हुआ था, एंड फाइनल स्टांजा टू सर्व एज हिज ओन इफिथ. द फेमस लाइन इज cast a cold eye on life on the death horseman pass by. So the correct answer is W.B. Yeats under the Ben Bulbe. Next question. Which section of the West Land begins and ends with the reference to Shakespeare's play Antony and Cleopatra and Hamlet respectively? तो वेस्टलैंड का तो कौन सा सेक्शन है जो स्टार्ट भी होता है शेक्सपियर के प्ले से और एंड भी होता है शेक्सपियर के प्ले से, गिविंग द टू रेफरेंसेस ऑफ शेक्सपियर्स प्ले एंटनी एंड क्लियोपैट्रा? सो द ब्यूरियल ऑफ टेड, द गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर. सो द क्वेश्चन नंबर 73 एंड द करेक्ट आंसर इज अ गेम ऑफ चेस. द करेक्ट आंसर इज गेम ऑफ chess. These are the section in the Westland: the burial of the dead, the game of chess, death by water, and fire sermon. Okay. इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती कि इसको सही से लगाओ. तो वेस्टलैंड का टाइटल का सेक्शन ये माना जाता है. तो it begins with the opulent description, wealthy women's room that heavily echoes Shakespeare's description of Cleopatra wherein Antony and Cleopatra, the chair she sat in like the burnished throne. Okay, and end with the chaotic closing time working class London pub, and the last lines are good night ladies, good night sweet ladies, good night, good night, good night. So departure of into the Ophelia's final word from the Hamlet. तो Hamlet के final word Ophelia से ending होती है, इसके starting होती है Antony और Cleopatra से. Next question. इस क्वेश्चन से पता चलता है कि हमें मेजर राइटर्स की कितनी डीप स्टडी करनी चाहिए. W.B. Yeats का जो कलेक्शन है पोम्स का, या ये जो है द वेस्टलैंड, T.S. Eliot का वेस्टलैंड की लाइंस पता होनी चाहिए, उसके बैकग्राउंड एज वेल एज द फोर क्वार्टेट आल्सो इम्पोर्टेंट, एज वेल एज W.B. Yeats का भी एक कलेक्शन ऑफ पोम्स है बड़ा सा, उसकी भी पूरी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सो डीप क्वेश्चन आस्क्ड, द प्ले थॉर विद द एंजल्स वाज कंपोज्ड बाय. ओके, John Galsworthy, Arnold Wesker, James Sanjay, Christopher Fry. So the question number 74 and the correct answer is Christopher Fry. So here
Thor with the Angel. It's a stylish religious verse drama by Christopher Fry, written specifically फॉर द कंटरबरी फेस्टिवल के लिए इसे पर्पसफुली लिखा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75. टोटल 79 to 80 क्वेश्चन हम देखेंगे. तो 76 को 75 क्वेश्चन देख लेते हैं. हु कॉइन द टर्म द मूवमेंट? द मूवमेंट इसको कॉइन किया था जेडी स्कॉट ने. बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है. द मूवमेंट इज कॉइन बाय 1954 जेडी स्कॉट. एंड हु वाज देन the literary editor of the Spectator. Next, through the window I see no star, something more near, thou deeper within darkness, it entering the loneliness, identify the poem. So it is a thought fox. D is the correct answer. So hawking roosting नहीं, lubrical नहीं, poem in the October नहीं. तो thought fox किसका वर्क था? तो ये जो लाइन है ये थॉट फॉक्स के लाइन है. एंड द लाइन फ्रॉम द ओपनिंग स्टांजा टेड ह्यूजेस की पोएम है. टेड ह्यूजेस सेलिब्रेटेड द पोएम द थॉट फॉक्स for his debut collection The Hawk in the Rain 1957, and the poem served as the brilliant extended metaphor for creative process. तो टेड ह्यूजेस का ये पोएम था. Seamus Heaney was awarded the Nobel Prize Literature in. नोबेल प्राइज, साहित्य अकेडमी प्राइज एंड ऑल लिटरेचर के जो अवार्ड है उस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है. ओके, सो द आइकॉनिक आयरिश पोएट सीमस हेनी को नोबेल प्राइज मिला था 1995 में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. आइडेंटिफाई द वर्क विच इज नॉट बाय द जे.के. चेस्टरटन. ओके, जे.के. चेस्टरटन का वर्क पहचानना है, नहीं जो नहीं है उनका. ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज द रोड टू द ट्रायमेन. Okay, so the option number C is correct. बाकी the Napoleon of Notting Hill is the work by Chesterton, the man who has the Thursday and the Heritages. And the last question, life is not a series of gig lamps symmetrically arranged. Life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of the consciousness, the end. Who said that? To Bertrand Russell, Virginia Woolf, John Osborne. And the correct answer is वर्जिना वुल्फ ने इसे कहा था. तो फेमस पैसेज आता है वर्जिनिया वुल्फ के लैंडमार्क 1990 क्रिटिकल मॉडर्न फिक्शन का ये पैसेज है. ओके, सेमी ट्रांसपेरेंट एनवलप. रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल सी इन द 16 और द 17 पार्ट ऑफ द वीडियो.